गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 14 क्लास 12 बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 14 इकोसिस्टम, और वी कैन से द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर टुडे। नाउ we will start with what is ecosystem and who coined the term ecosystem. Okay, first is what is ecosystem. Who coined the term ecosystem? Okay, because the name of the chapter is ecosystem. Now, the term ecosystem was coined by Sir A.G. Tansley in 1935. The term ecosystem was coined by Sir A.G. Tansley. Okay, when 1935. Now, what is ecosystem? The ecosystem is the basic functional ecological unit. The ecosystem is the basic functional ecological unit. The ecosystem is the basic functional ecological unit in which the living organism, basic functional ecological unit in which the living organism interact among themselves, and with their surrounding physical environment. ओके, तो इकोसिस्टम क्या है? ये एक बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है इसके साथ, among themselves as well as with their surrounding physical environment. That is called ecosystem. Now, the size of the ecosystem varies from a small pond to a large forest or sea. The size of the ecosystem varies from small pond to large forest और इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम नहीं, सी सॉरी। ओके, तो ये हो गया साइज ऑफ द इकोसिस्टम। साइज ऑफ द इकोसिस्टम वेरीज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। नाउ द इंटायर बायोस्फीयर इज रिफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। द इंटायर biosphere is referred to as, the entire biosphere is referred to as what? Global ecosystem.
global ecosystem which contain several local ecosystem of the earth. ठीक है, the entire biosphere is referred to as global ecosystem which contain several local ecosystem of the earth. तो ये हो गया फर्स्ट. द टर्म इकोसिस्टम was given by Sir A.G. Tansley in 1935. Now the question is, what is ecosystem? Ecosystem is the basic functional ecological unit in which the living organism interact among themselves as well as with their physical environment. Physical environment means the abiotic components like air, water, sunlight, temperature, that's all. Okay. Now next, what is the size of the ecosystem? The size of the ecosystem is variable. That means it varies from small pond to a large forest or sea area. Now the entire biosphere is referred to as global ecosystem which contain several local ecosystem of the earth. What it contain? Several local ecosystem of the earth. यहां तक समझ आया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन. इकोसिस्टम को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है. Classification of an ecosystem. अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम. सेकेंड, artificial ecosystem. Now natural ecosystem is again divided into terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Okay, next is this terrestrial ecosystem is again divided into forest, grassland and desert. Forest, grassland, desert. This is called terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystem, it is divided into freshwater and saltwater ecosystem. Fresh water ecosystem and salt water ecosystem. Now this fresh water is divided into pond, लेक्स एंड स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब झरना. पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. एंड सॉल्ट वाटर इज डिवाइडेड इनटू वेटलैंड, estuaries and marine. Wetlands, estuaries
and marine water. Okay, these are the three types of saltwater ecosystem. Now artificial. Okay, artificial means man made ecosystem, and the man made ecosystem is crop feed, and aquarium. ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल, टू पार्ट. नेचुरल इकोसिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम. एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम वेटलैंड्स, एस्चुरीज और मैरीन. मैन-मेड इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम. ठीक है, तो ये हो गया टोटल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का डिफरेंसेस, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्लियर. अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम क्लियर हुआ. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Ecosystem structure and सबसे पहले द इकोसिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. द ecosystem consists of biotic and abiotic components. It consists of biotic and abiotic components, and their interactions with each other, and their interaction with each other resulting in a physical structure. ठीक है, so the ecosystem consists of biotic and abiotic components and their interaction with each other resulting in physical structure. ठीक है, now the flow of energy takes place within this component of the ecosystem. The flow of energy takes place within this components of ecosystem. Okay, the flow of energy takes place within this component of ecosystem. The identification and enumeration of plant and animal. Okay, the identification and enumeration of plants and animal species. Plants and animal species. Okay,
in an ecosystem gives its क्या species composition. Okay, so the identification and enumeration of plants and animals species in an ecosystem give its species composition. Okay, यहां तक समझ आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में जो है वो देखेंगे कंपोनेंट्स. देखो इकोसिस्टम है क्या. ठीक है, इसको मिटा देना. आई थिंक यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. कंपोनेंट्स ऑफ एन ecosystem. First, biotic component. Second, abiotic components. Biotic components producers, consumers and decomposers. Now producers, they are basically autotroph, and autotroph are of two types: photoautotroph and chemoautotroph. Okay, phototroph means those who make their own food in the presence of light, and chemotroph means those who make their food in the presence of chemical. Now consumer means primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and top consumer. Primary consumer, herbivore. Secondary consumer, carnivore. Tertiary consumer and top consumer means they are the final consumer. Sometimes top consumer is also known as quaternary consumer. Okay, now decomposers. We all know bacteria, fungi, these are working as a decomposer who convert the complex dead and decaying body as of plants and animal as well as excreta of animal into simple soluble one. This group of organisms are called decomposers. Okay, now abiotic component: air, water, humidity, soil, okay, temperature. ठीक है, so these are the abiotic components, that is air, water, humidity, soil and temperature, and this is the biotic components, and the interaction between these two forms a stable ecosystem. Okay, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन मींस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके,
vertical distribution of different species, vertical distribution of different species, different species का जो vertical distribution है, occupying different level, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. Example, in a forest ecosystem, forest ecosystem जो है tree occupying a top strata. Okay, tree occupying a top strata. Now shrubs, the second shrub, second, and herbs and grasses occupying the herbs and grasses occupying the bottom layer, occupying the bottom layer. ठीक है? तो vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. Basically strata का मतलब ही होता है लेयर. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे बेसिक स्ट्रेटा में कौन है? बेस लेवल में वो है तुम्हारा ग्रास. ग्रास के बाद हर्ब श्रब हो जाएगा सेकेंड स्ट्रेटा में, और टॉप स्ट्रेटा में कौन हो जाएगा? ट्री. ठीक है. नेक्स्ट, द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है? प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, ओके, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. द मेजर function of an ecosystem includes: 1. Decomposition. Third, energy flow. Energy flow or nutrient cycling. The major function of an ecosystem include productivity, decomposition, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है. तो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. ओके, यहां तक समझ आया? ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम. ठीक है. पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं. ठीक है. ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम. Pond ecosystem is divided into two parts. Abiotic
biotic. Abiotic, biotic it is of two type, producer, consumer, decomposer. प्रोड्यूसर में क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, सम एल्गी, फंजाई, ठीक है, एल्गी फ्लोटिंग, फंजाई नहीं सॉरी फंजाई एल्गी फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। नाउ कंज्यूमर में होगा जू प्लैंक्टॉन्स, जू मीन्स एनिमल एंड प्लैंक्टॉन मीन्स फ्लोटिंग, ओके। इसके साथ साथ क्या होगा? फ्री फ्लोटिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। डिकम्पोजर में क्या होगा? फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स, ओके। दिस इज बायोटिक, ओके। जब पढ़ रही है तो कम से कम बताओ क्या गलत है। दैट मीन्स यू आर नॉट कंसंट्रेटेड। तुम लोग समझ नहीं आया कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर ये बायोटिक नहीं होगा? हाँ, अब एबायोटिक, देखो बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये दिमाग में रखो तभी याद रहेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद बायोटिक, एबायोटिक में सॉइल, ओके। सॉइल के बाद क्या होगा? वाटर, O2, CO2 डिसॉल्व। नेक्स्ट सोलर रेडिएशन, सनलाइट, जो भी बोलो बात एक है। सोलर रेडिएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइटोप्लैंक्टन टू मेक देयर ओन फूड। एंड फाइनली, okay, so these are the essential components, that is abiotic component of the pond ecosystem, and these three, producer, consumer, decomposer, these are the biotic. Biotic means living, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखो इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है, जैसे द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आर कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल है, दे आर कन्वर्स्ड और कन्वर्टेड विद द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट, द इनऑर्गेनिक and organic materials are converted with the help of the radiant energy. The inorganic and organic material are converted with the help of radiant energy of sun by the autotroph, that means who are able to make their own food. Next, heterotroph consume autotroph. That means heterotroph में कौन आएगा? herbivore. Herbivore are those animal who eat or take plant or plant product. They are consuming autotroph. Third, decomposers. Decomposers क्या करेगा? Decompose the
dead organic matter. Decomposer decompose the dead organic matter to release them back for reuse by the autotroph. Okay, means जो डिकम्पोजर्स होता है दे आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट साइकिल. डिकम्पोजर किसमें इन्वॉल्व है? न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसका और एक नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल. इन दिस चैप्टर, इन द लास्ट टॉपिक वी डील अबाउट द न्यूट्रिएंट साइकिल, स्पेशली कार्बन एंड फॉस्फोरस. ओके, एंड फाइनली the matter and minerals are also recycled between biotic and abiotic components. The matter and minerals are also recycled between biotic and abiotic components. So first, the inorganic and organic material are converted with the help of radiant energy of the sun. By whom? Autotroph. Second, autotroph are consumed by heterotroph. And finally, both autotroph and heterotroph's dead body and their waste are decomposed by the decomposer to release back them into the atmosphere and the soil, from where it is reused by autotroph. In this way, these nutrients are cycled between the biotic and abiotic component of the earth. This is also known as biogeochemical cycle or nutrient cycle. यहां तक समझ आया? क्लियर? ठीक है, आज इतना ही. कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको. ठीक है, विद इन 3 क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ट्यूसडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा. ओके, इसको पढ़ लो अच्छा से.